Move on here on the right stand this week as the Modi Sarkar completes 9 years in power and governance. We are trying to connect with various voices within the government with the tasks that have been given to them and of course get their points of view on 9 Saal Modi Sarkar or Modi at 9. So joining us without much further ado, let's go across. He's through with us. Is the Union Minister for Power and Renewable Energy, Shri R.K. Singh. R.K. Singh ji, namaste, Jai Hind, and thank you for joining us on the week when your government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi completes 9 years. And you are in charge of a very critical ministry that has to deliver on a lot of promise to champion the growth story. How have you done so far? We have delivered, Anand. We have delivered. This government under Prime Minister Modi has actually changed the power sector entirely. It's totally different from what it was when our government came to office in 2014. When we came to office in 2014, the power deficit was in the region of near about 9 to 10%. Today we are surplus. I mean, our peak demand has gone up from 1,35,000 megawatts in 2014 to 2,12,000 megawatts today. But we have established a capacity of 416,000 megawatts. In fact, we added in this past 9 years, we added almost about 183,000 megawatts of capacity, 184,000 megawatts of capacity. And today we export power to our neighboring countries. So power deficit to power surplus. We've connected the whole country into one grid, Anand. We added almost about 180,000 circuit kilometers spanning the whole country. And we've connected the areas as far as Leh, Ladakh, spanning some of the highest passes in the world, 15,000, 16,000 feet high. And today we can transfer about 112,000 megawatts from one part of the country to another. Earlier in 2014, you could transfer only about 37,000 megawatts odd. We spent, under Deen Dayal Gram Jyoti Yojana and the IPDS and Saubhagya, we spent almost about 2,10,000 crores, 2,12,000 crores on the distribution companies, strengthening the distribution sector. We built almost about 2,912 new substations, upgraded about 3,980 substations, added almost about 8.5 lakh circuit kilometers of HT lines, LT lines, almost about 750,000 new transformers, etc., etc. The net result of all this has been that one independent survey carried out in 2015 pegged the availability of power in the rural areas at about 12.5 hours. Today it is 22.5 hours. Wow. I mean, in the rural areas, mind you. In the urban areas, it's about 23.5 hours. That's the difference we've made. Totally, as far as the power sector is concerned, we've made, in fact, we brought in ease of doing business. We brought in concepts like you have done a lot. You have done a lot, R.K. Singh ji. But we have Rahul Gandhi abroad in foreign shores. So, as a bureaucrat in the past, a neta now, the people he's engaging with and what he's communicating there. Your thoughts? Anand, it's Anand, something. These people, I would say substandard almost. He does not get, Mr. Rahul Gandhi does not get any audience here because he does not have any following here. He's not important. You see, he lost his seat. And then he had to go somewhere where the vote bank would enable him to win. Then after that, what he did was that he abused one whole community, an OBC community at that. And some people filed a case and he got convicted therein. Now, he got convicted by a judicial court, mind you. Judiciary is independent, and they convicted him. And because of that conviction, he lost his seat. That's the law. And he goes and says that he has been unfairly convicted. He is introducing the judiciary. He has filed an appeal, etc. He should let the law take its course. And he says that he has been unfairly convicted, and he says that because he has been unfairly convicted, he has been unfairly ejected from parliament. He can't believe that he was utterly disqualified. shameful thing is, number one, he misleads people out there. Number two, he gathers 100, 200 people in a hall
and he gets an audience and then gets it flashed here. I mean, the number of people who come out to hear him would not be more than, you know, the 200, 300, even there. And here also, I think the number would be similar. The you know, the thing I notice, and which you would have noticed, is that you have people in the Congress who go abroad to, you know, sort of run down their country abroad. Do you see any other leader from any other country doing this, running down their country in other countries, abroad? No other country does that. No other leader in another country does that. These people have the habit of going to another country and running down their own country. A country which the whole world is, you know, hailing for its rapid, you know, rate of growth. And it's not our figures, you know, they have independent assessments, the IMF, the World Bank, and they all carry out surveys. Right. And we have emerged as, you know, the fastest growing economy in the world. Everybody is hailing us for that. And these people try and run down our country abroad. It is utterly shameful. I mean, they have no pride in their country. I mean, utterly shameful. You have this gentleman. You had, you know, somebody like Salman Khurshid who went to Pakistan and to the Pakistan training, you know, military training center, and there he ran down our country. Shameful, utterly shameful. I mean, what sort of people are these? I'm telling you that. They don't have any pride in their country. And they go their on point a of view is they're not running down the country, but they're opening up a front against the government and especially against Prime Minister Narendra Modi. Now you're also seeing opposition unity against the PM. R.K. Singh ji. Anand, you know the reality. I know the reality. You know, Anand, you know the reality. I know the reality. The thing is that these people can't stomach anybody outside the Gandhi Parivar. You know, becoming the Prime Minister. The people, I mean, you have become irrelevant, accept it. The family does not work anymore, accept it. And they don't accept it, they find it very difficult to accept it. Now this fellow, you know, he lost one seat, he ran away to another place to get elected. I'm quite sure that the next time he'll lose that seat as well. If he goes there and, you know, sort of does what he did in Amethi, which means zero development, I don't see why anybody should vote for him. But there are others within the opposition too. Take Bihar, RJD for that matter. They compared the new parliament which is designed on the Shri Yantra, they compared it with a coffin. Just imagine. ये शर्म की बात है. ये अनपढ़ और भ्रष्ट लोगों को क्या कहोगे आनंद, ये बताओ. जो लोग की इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये चारा घोटाला हुआ, ये बहाली के लिए घोटाला हुआ, नियुक्ति घोटाला हुआ, पैसा लेकर के नियुक्ति, जमीन लिखो, जिसके पास, जिस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था बहाली के लिए, उससे जमीन लिखवा लिया बहाली के लिए, उसमें वैसे केस में फंसा हुआ है और सीना तान के चल रहा है. ये क्या है साहब, शर्म नहीं आती है? और ये लोग भाषण देते हैं भ्रष्ट. They have a heart. शर्म आनी चाहिए. ये लोग वही लोग हैं ना आनंद, जो कि नियुक्ति घोटाले में थे, जमीन लिखवा लिए थे ना. कैन यू इमेजिन साहब, आप जमीन लिखवा लीजिए तो कभी तो पकड़े जाइएगा ना, वो तो रिकॉर्ड हो गया ना जी. चलिए, जिस बेचारे गरीब को नौकरी दी उसका जमीन आप लिखवा लिए, शर्म भी नहीं आती है. पर आरोप आप पर है, यानी आपकी सरकार पर है कि जो हाल, यही राहुल गांधी ने कहा है कि जो हाल दलितों का 80 के दशक में था, आज यहाँ पर माइनॉरिटीज का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ट्राइबल्स का है. इनका तो वोट बैंक हमेशा यही रहा है ना आनंद. आनंद ये नई बात नहीं है जी. ये शुरू से कांग्रेस पार्टी का ये वोट बैंक, कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहा है कि माइनॉरिटी को वोट बैंक बनावे. अब वोट बैंक की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, आज तक कुछ किया नहीं उनके लिए, लेकिन बोला कि साहब हम ही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वही तो फिलॉसफी इनकी अभी चल रही. अब तो लेकिन ये जनता समझ गई, जनता जान गई, इसीलिए लोग उसको वोट नहीं करते. इसीलिए तो इतनी बुरी हालत हो गई है इनकी. आपका कहना है कि ये भ्रांतियां अब नहीं चलेंगी. लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, हर चुनाव में अब एक ही चीज सबके मैंडेट में है कि बिजली फ्री. ये अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, कर्नाटक में देख रहे हैं, अब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं. सबका कहना है कि 100 यूनिट 200 यूनिट इतनी बिजली फ्री. ये फ्रीबी का कल्चर वो भी बिजली से चल रहा है. R.K. सिंह जी. आनंद, हमने एक व्यवस्था जी. ये लोग दो बात आनंद जी, ये बहुत गंभीर बात. ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको कि अपने प्रदेश के भविष्य
की चिंता नहीं है, देश के भविष्य की चिंता नहीं है, प्रदेश के कल्याण की चिंता नहीं। ये बिजली फ्री नहीं है, बिजली का भुगतान करना होगा। क्योंकि कोयला का भुगतान कोयला फ्री नहीं है। जो मजदूर काम करता है थर्मल पावर प्लांट में या किसी पावर प्लांट में, उसको वेतन देना है, तो बिजली फ्री नहीं। ट्रांसमिशन लाइन जो सेटअप किया उसको पेमेंट करना है, तो बिजली फ्री नहीं है, किसी को भुगतान करना होगा। अगर ये आप चाहते हैं कि कंज्यूमर भुगतान नहीं करे तो आपको अपने बजट से करना होगा। आप तो अपने बजट से कर रहे हैं। दिक्कत यह है आनंद कि ये जो जितने भी राज्य हैं जो कह रहे हैं बिजली फ्री, ज्यादातर राज्यों का हमने देखा है फिगर्स निकाल करके बजट का, जो रेवेन्यूज हैं उनके, एक तो जो उनका रेवेन्यू है उसका 20-25% ही उनके अपने टैक्सेस हैं। 75% तो केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका हिस्सा जो जाता है राज्य को, वो है। जितना भी उनका रेवेन्यू रिसीट्स है वो सब चला जाता है सैलरी में, पेंशन्स में, जो पुराना लोन लिए उसका रिपेमेंट में। उसके बाद इनके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो अब ये दूसरा जो फ्री भी दे रहे हैं उसके लिए और बोरो करते हैं, यानी कि भविष्य में आने वाले जनरेशन पर वो बर्डन थोप रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में राज्य आ गए हैं कि पुराने लोन को रिपेमेंट करने के लिए कुछ राज्यों का ये हालत हो गया है, नए लोन लेने पड़ रहे हैं, यानी कि डेट ट्रैप में आ गए हैं। लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है कि हाँ साहब तो हम अपने लोगों को डेट ट्रैप में धकेल रहे हैं। उनको तो साहब कोई ये बजट का पैसा फ्री बांट करके ऑफिस में आ जाना है, एक तो ये कहना है। दूसरा ये इस पहलू पर हर एक भारतीय को चिंतित होना चाहिए। दूसरा, मैंने ये व्यवस्था कर दी है आनंद जी, क्या व्यवस्था कि आप चाहे जो करें, आप सबको फ्री बिजली देना है, फ्री बिजली दीजिए, आपके इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बिजली आपको आपूर्ति हो रही है जनरेशन कंपनीज के द्वारा, उसका भुगतान आप नहीं करिएगा तो आपकी बिजली कट जाएगी। ये हमने ऑटोमेटिक कर दिया है और ये बिजली ऑटोमेटिक कट जाती है। अब उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, इसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया। अब पहली बार क्या हुआ कि 12-13 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की बिजली कट गई, आपको याद होगा। अब बीच बीच में 1-2 के कट जाते हैं तो जल्दी से वो भुगतान करते हैं। वो अपने थर्मल पावर प्लांट को जैसे चला ले, उसके में भी तो कोयला का दाम उनको देना ही पड़ता होगा। लेकिन जो नेशनल पावर प्लांट्स हैं उसमें उसका बिजली वो ले रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोग ले रहे हैं, तो उसका आपको भुगतान करना है, नहीं तो आपकी बिजली कट जाएगी। ये व्यवस्था हमने कर दिया और इससे हमने इंश्योर कर दिया है कि जितना भी इररिस्पांसिबल पॉलिटिक्स ये लोग करे जी, इस मामले में ऑप्शन यही है, या तो भुगतान कट जाए या बिजली कट। तो आप कह रहे हैं कि फ्रीबीज से जो सरकार में आएंगे उनको नुकसान होगा, लेकिन उनको बिजली फ्री नहीं मिलेगी। That you put processes in place. Final question, RK Singh ji, समय कम है, अल्प है. Surveys are saying BJP remains popular. Its popularity has grown by 2-3%. Prime Minister remains popular, but the Congress's popularity has grown up by 10%. 2024 के लिए थोड़ा वरीइंग है या आपको लगता है मार्ग प्रशस्त है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये हमको एकदम बिल्कुल ये दुनिया का 7वां अजूबा लगता है। कांग्रेस का क्या है ये भैया नेतृत्व, ये लोकप्रियता बढ़ने का क्या ये है, आप ये हमको बताइए। ये आप अगर ये हमको सही नहीं मानते। अगर आप ये कहिएगा कि हाँ देश में कौन प्रधानमंत्री बने, तो हमको लगता है कि 99% या कहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी बने, 1-2% कहेंगे कि कोई और बने। ये कोई नहीं कहेगा कि सोनिया गांधी बने, ये कोई नहीं कहेगा। ये कोई नहीं कहेगा कि राहुल गांधी बने, ये कोई नहीं कहेगा कि खड़गे जी बने। आप पूछ लीजिए, ये मेरा दावा है। अब सर्वे तो कह रहे हैं कि और भी हो सकते हैं, पर आरके सिंह जी बेबाक हमेशा की तरह, एज ऑलवेज निर्भीक, बेबाक, कैंडिड एंड एब्सोल्युटली अपफ्रंट। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू सर। नमस्ते, जय हिंद।